Good morning, students. Welcome to the new class. And today we shall discuss about basic concepts in chemistry. And in that case, we shall discuss about the mole concept. You know, basic concepts in chemistry में अगर हम study करें, so first of all you must know about the chemistry. What do you mean by chemistry? Chemistry means to say what? 10th या 9th में भी आपने study किया होगा. Chemistry is the study of matter. ओके और मैटर आपको पता है कि एनीथिंग अराउंड अस व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग सम मास एंड प्रेजेंस ऑफ व्हिच कैन बी एक्सपीरियंस्ड और फेल्ट बाय एनी वन ऑफ आवर फाइव सेंसेस इज नोन एज द मैटर. और मैटर के बारे में जहां पर स्टडी करेंगे दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज व्हाट? केमिस्ट्री. वी कैन से द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज नोन एज व्हाट? केमिस्ट्री. और प्रॉपर्टीज का मीन टू से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई और फिर उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई. यानी किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस. दीस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके. और केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर स्टडी करें तो व्हाट इज अबाउट द बिहेवियर टुवर्ड्स द केमिकल रिएक्शंस, दैट इज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज. व्हाट इज अबाउट द कंपोजिशन, उसके बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज अबाउट द chemistry. So we can say that the branch of science which deals with the study of composition and properties of matter is known as chemistry. And you know there are the various applications of chemistry in our daily life, on the basis of which we can say that life is impossible without chemistry. Okay, for example let us consider जितने भी life saving drugs होती हैं like डिस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया. Okay, इसी तरह से so many drugs they are obtained with the help of chemistry. All the drugs, all the life-saving drugs known as the medicines, all are the chemical compounds. Okay, anti-malarial drugs हो गए, antibiotics हो गए, antiseptics हो गए, disinfectants हो गए, ये सारे के सारे chemical compounds हो गए. Tincture of iodine का नाम सुना होगा आपने, that is the mixture of ethyl alcohol and iodine. Dettol, the mixture of chlorozybinol and alpha terpinol. All these are the chemical compounds. इसी तरह से जितने भी फर्टिलाइजर्स हो गए, यूरिया इज द एग्जांपल, नहीं? सो दैट इज द फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर इज आल्सो द केमिकल कंपाउंड. इसी तरह से जितने भी डाइज होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो क्लॉथ को या फाइबर को या फूड को कलर प्रोवाइड करते हैं, दे आर नोन एज द डाइज एंड ऑल द डाइज आर द केमिकल सब्सटेंसेस. ठीक है. इसी तरह से प्रोपिलेंट्स जो हो गए, फ्यूल्स एंड प्रोपिलेंट्स, तो substances which can undergo combustion to provide energy, they are known as the fuels. और वो fuels जो space vehicles में use करते हैं, they are known as propellants. Let us consider petrol plus liquid oxygen. The mixture is known as propellant. The propellant is composed of the two components. One is known as the fuel and another is known as the oxidizer. Okay, you know high altitude के ऊपर जाएंगे तो the concentration of oxygen gets decreased. इसलिए वहां पर definitely combustion के लिए oxygen जो है that is also required. So in case of propellant, fuel plus oxidizer is required. And another concept is about what we can say another properties or applications अगर हम chemistry की study करें तो उसके साथ जितने भी cosmetics होते हैं they are also the chemical compounds. So one by one हम study करेंगे about the different applications of chemistry. So first of all, what do you mean by chemistry? So chemistry we shall discuss. We can say the branch of science which deals with the study and composition, which deals with the study of composition and properties of matter is known as chemistry. Okay, and you know there are various applications of chemistry. In our daily life.
Okay, better. So definitely chemistry is one of the most important, most wide subject, and I think you will get so much interesting concepts in chemistry. So seriously in notes को study करें, and let us consider there are the various applications of chemistry in our daily life. We can say all the life-saving drugs are the examples of chemical compounds. इसी तरह से fuels and propellants are the examples of chemical substances. इसी तरह से for example chemicals in food. और chemicals in food का example अगर हम स्टडी करें, so you know antioxidants फूड के ऑक्सीडेशन को स्टॉप करता है. नेक्स्ट अबाउट द फूड प्रिजर्वेटिव्स, बैक्टीरिया से जो डिकम्पोजिशन होती है फूड की, उसको इनहिबिट करने के लिए जिन केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करेंगे, फूड प्रिजर्वेटिव्स. इसी तरह से आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स विदाउट एनर्जी प्रोवाइड किए, विदाउट ग्लूकोज प्रोवाइड किए, जो स्वीटनेस काज करेंगे, दे आर नोन एज द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स. यू नो कैलोरी फ्री शुगर्स भी कहेंगे इनको, एंड दे आर यूज्ड बाय द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज. ओके, इसके अलावा और अगर हम एग्जांपल्स स्टडी करें तो फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स आर आल्सो द केमिकल कंपाउंड्स. इसी तरह से और एग्जांपल अगर हम स्टडी करें तो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर यू आर हैविंग life-saving drugs are there, fuels are there, chemicals in food are there, fertilizers are there, dyes. Dyes का मतलब we can say chemical substances which impart color to the food, which impart color to the clothes, which impart color to the fibers. They are known as the dyes. तो जितने भी dyes हैं, they are also the examples of chemical substances. इसी तरह से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अगर हम स्टडी करें तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, दे आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. यू नो सोप इज द सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, और फैटी एसिड का मतलब जहां पर लॉन्ग एल्काइल चेन होती है. एंड डिटर्जेंट्स आर सोडियम सोल्ट्स ऑफ एल्काइल सल्फोनिक एसिड. SO3 negative and Na positive. Sodium salt of sulfonic acids, the detergents. You know, they can be applied in soft water as well as hard water, but they can be applied only in soft water, not in hard water. क्योंकि आपको पता टाइम में पढ़ा होगा आपने, they can form the scum. So you know, chemistry is having the various types of applications. Life-saving drugs mean to say simply we can say about the medicines. ओके, इसी तरह से और लाइफ सेविंग ड्रग से मेडिसिन के एग्जांपल अगर हम स्टडी करें तो एस्प्रिन, डेफिनेटली एस्प्रिन कैन बी यूज्ड एज एनाल्जेसिक. इसी तरह से फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल कैन बी यूज्ड एज एंटीपायरेटिक. हालांकि एस्प्रिन जो है दैट कैन बी यूज्ड एज एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीपायरेटिक. एस्प्रिन इज 2-acetoxy बेंजोइक एसिड. तो देखो केमिकल कंपाउंड हो गए, और बेंजोइक एसिड का मतलब बेंजीन इज कंटेनिंग द COOH ग्रुप, और एसिटॉक्सी का मतलब OCO(CH3). इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्प्रिन. पैरासीटामोल इज व्हाट? पैरासीटामोल इज पैरा हाइड्रोक्सी एसिड एनिलाइड, NH C double bond OCH3 and OH. It is the structure of paracetamol. पैरा हाइड्रोक्सी एसिटेनालाइट. इसी तरह से यू आर हैविंग AZT एजाइडोथायमिडीन, डेफिनेटली यूज्ड इनटू द ट्रीटमेंट ऑफ AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. So AZT. Okay, so these are the very simple applications of chemistry are there, and on the basis of these applications we can say that life is impossible without
केमिस्ट्री, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर्स डेली लाइफ में यूज होते हैं. ओके, सो इन केमिस्ट्री वी हैव टू स्टडी अबाउट द मैटर. तो केमिस्ट्री में हमने मैटर के बारे में स्टडी करना है. What is about the composition of matter and what is about the physical and chemical properties of matter. So matter is what? Matter का मतलब you know anything around us. Anything around us which can occupy space, having some mass, and presence of which can be experienced by any one of our five senses is about the matter. And you know matter का दो तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम. One is about the physical classification, okay, and second is about chemical classification. So two types of classification are there. Physical classification के बेस पर अगर हम स्टडी करें, so you know matter is classified into the three types. One is known as the solid, another is known as the liquid, and third is about gas. You know these are the three physical states of matter at room temperature. इसके अलावा आपको पता है कि दो फिजिकल स्टेट्स और भी होती हैं. One is about Bose-Einstein condensates. होते हैं कि नहीं? Which are possible at very very low temperature. And another is about plasma. You know plasma is the ionized form of gas and it is possible at very very high temperature. You know plasma is present in case of stars. So these states are not possible at room temperature. This is possible at very very high temperature and this is possible at very very low temperature. जो stable physical states है matter की room temperature पे वो तो तीन ही है, solid, liquid and gas. Okay? और chemical classification के बेस पर अगर स्टडी करें, so matter is further classified into three types. यानी मैटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करें, किन किन पार्टिकल से बना है उनके बेस पर अगर स्टडी करें. सो थ्री, वन इज अबाउट एलिमेंट, यू नो, सेकंड इज अबाउट कंपाउंड, यू नो, एंड थर्ड इज अबाउट मिक्सचर. सो दीज आर द थ्री parts of matter on the basis of chemical classification. So we can say on the basis of physical classification there are three types of matter: solid, liquid and gas. And you know physical classification के बेस पर हम states of matter भी कह सकते हैं कि नहीं. So you know there are three states of matter: solid, liquid and gas. And on the basis of chemical classification, on the basis of chemical composition, the matter is composed of three types: element, compound and mixture. You know very well what is about the solid. You know the state of matter having definite shape and definite volume. Okay, वॉल्यूम और शेप दोनों डेफिनेट होते हैं. चौक की बात करें तो चौक की शेप यही रहेगी, चाहे इसको मेरे हाथ में रख दें, टेबल पे रख दें या किसी बाल्टी में रख दें या किसी कप में रख दें, इसकी शेप तो चेंज नहीं होगी. जितना स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहा है उतना ही किसी दूसरी जगह ऑक्यूपाई करेगा. तो जो अपनी शेप और वॉल्यूम को चेंज नहीं करेंगे डेफिनेट होते हैं सॉलिड. ओके, एंड यू नो द स्टेट ऑफ मैटर व्हिच इज हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप. ये लिक्विड की जो शेप है वो कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी कि नहीं. अगर हम मान लो पानी को ग्लास में डाल रहे हैं तो शेप जो है दैट विल जस्ट बिकम सेम एज दैट ऑफ ग्लास. बाल्टी में डाल ले तो फिर वैसी बन जाएगी, नीचे फर्श पे डाल दे तो फिर फ्लैट हो जाएगा नहीं. बट वॉल्यूम जो है वो अपना ही रहता है. लिक्विड का वॉल्यूम खुद का रहता है. 10 लीटर के कंटेनर में 5 लीटर लिक्विड डाल देंगे तो लिक्विड का वॉल्यूम तो 5 लीटर ही रहेगा. और अगर हम उसको 20 लीटर के कंटेनर में डाल देंगे तो भी लिक्विड का वॉल्यूम तो 5 लीटर ही रहेगा नहीं. तो जिसका वॉल्यूम खुद का होगा नहीं, हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, लिक्विड. और गैस का मतलब द स्टेट ऑफ मैटर नाइदर हैविंग डेफिनेट शेप और नॉट डेफिनेट वॉल्यूम. यानी शेप और वॉल्यूम कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, कुछ भी खुद का नहीं होता. गैस का वॉल्यूम उतना ही होता है जिसमें कंटेनर का होता है. जिस कंटेनर में ट्रांसफर करोगे वही वॉल्यूम होगा. A gas is filled in a 10 liter container, so volume of gas is also 10 liter. A gas is transferred, the same gas is transferred into 20 liter container, तो volume जो है गैस का वो भी 20 liter होगा.
नहीं, और जो शेप है वो भी कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड। द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, लिक्विड। एंड द स्टेट ऑफ मैटर नाइदर हैविंग डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम इज नोन एज द गैस। और आपको पता है कि सब कुछ डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस पे। एलिमेंट इज व्हाट? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज एलिमेंट, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल है, दैट इज द एलिमेंट। और and we can say compound, the matter which is composed by combination of two or more elements in a fixed ratio, two or more elements in a fixed ratio, that will be the compound. And we can say the matter which is composed by the combination of two or more components in unfixed ratio, in indefinite ratio, in any ratio, mixture. यानी जहां पर components का ratio हम change कर सकते हैं, that will be known as the mixture. NaCl is dissolved in water, so definitely there will be the formation of solution. You can change the amount of NaCl and you can change the amount of water. So definitely there is the mixture. तो जहां पर हम components के amount को change कर सकें, mixture fix amount होती है, components की change ही नहीं कर सके, that will be the compound. So you know it is about the classification of matter. So one by one हम study करते हैं. Let us consider about the physical classification। और फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर आपने स्टडी किया कि मैटर जो है दैट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। वन इज अबाउट द सॉलिड, another is about liquid, and third is about gas. These are the 3 states of matter, you know: solid, liquid and gas. So we can say that the state of matter having definite shape and definite volume is known as solid. Liquid, we can say that the state of matter having definite volume but not definite shape is known as liquid. And gas, we can say that the state of matter neither having definite shape nor definite volume is known as gas. There are the 3 states of matter, you know: solid, liquid and gas. You know, in case of solid, every factor is fixed, क्योंकि पार्टिकल मूव ही नहीं करते, और मूव इसलिए नहीं करते क्योंकि सॉलिड्स के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं कि नहीं. In case of liquid अगर हम स्टडी करें, so definitely there is a presence of weaker intermolecular forces of attraction, and in case of gases there is a presence of negligible intermolecular forces of attractions. Negligible, ना के बराबर force of attractions है in case of gases. You know, in case of solids, particles cannot move, यानी mobility of particles is negligible. Here we can say mobility यानी ability to move, mobility of particles is high. And in case of gases, particles are always under rapid motion, always rapid motion में होते हैं, they are continuously moving. Okay, इसी तरह से you know solids को अगर हम स्टडी करें यहाँ पर, so here we can say that the particles are
closely packed. There will be the close packing in solids, and here the particles are slightly apart from each other. एक दूसरे से थोड़ी दूर दूर होते हैं, और यहां पर अगर हम करें तो पार्टिकल्स जो है दे आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम each other. So they are further apart from each other in case of gases. Okay, you know particles are closely packed. So mass per unit volume बहुत हाई होगा कि नहीं, एक यूनिट वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मास हो गया. So solids की जो डेंसिटी है that will be the maximum. Liquids are having lower density as compared to solids, and gases are having the minimum density. So you know these are the various characteristics are there. All the ionic compounds are the solids. All of the metals except mercury are the solids. सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, all are solids. Okay, H2 is liquid in nature, you know. Bromine is the liquid. Okay, इसी तरह से so many examples are there. H2SO4 हो गया, ethyl alcohol हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, CCl4 हो गया, N2, O2, CO2, helium, neon, argon, all are the examples of gases. So you know there are three states: solid, liquid, and gas. You know solids are further classified into the two types. Solids further दो टाइप के होते हैं. One are known as crystalline solids and second are known as amorphous solids. Crystalline solids का मतलब there is a regular order of arrangement of particles. यानी शुरू से आखिर तक एक तरह से अरेंज होते हैं सारे पार्टिकल्स. क्रिस्टलाइन और इरेगुलर ऑर्डर में अगर अरेंज होते हैं, बार बार जो ऑर्डर है अरेंजमेंट का वो चेंज हो रहा है, तो दे आर नोन एज amorphous solids. एंड यू नो amorphous solids का एग्जांपल अगर हम स्टडी करें तो ग्लास इज द एग्जांपल ऑफ amorphous solid, रबर इज द एग्जांपल ऑफ amorphous solids. ये जितने भी पॉलीमर्स होते हैं लाइक पॉलीथीन हो गया या पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पीवीसी, these are the amorphous solids. So crystalline solids के तो एग्जांपल सारे आयनिक सॉलिड्स हो गए like NaCl, like KCl. Okay, crystalline solids की अगर हम बात करें तो all the ionic compounds NaCl, KCl हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया. नहीं, इसी तरह से for example let us consider you are having the metals sodium, magnesium, potassium हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन. इसी तरह से ग्रेफाइट, डायमंड. These are the examples of crystalline solids. So three states of matter are there. One is about the solid, another is about the liquid, and third is about the gas. So it is about the physical classification of matter. ठीक है, और नेक्स्ट केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में सेकंड लेक्चर में स्टडी करेंगे. सो इट्स ऑल फॉर दिस डे. थैंक यू. ओके, सो डेफिनेटली आप इनको स्टडी करना आज ही डिटेल में. सीरियसली आपने इन वीडियो लेक्चर को देखना है और फिर उनके नोट्स भी बना के देखना है. सो इट्स वेरी सिंपल. तो ये तो स्लाइड जो है एक तरह से रिवीजन हो गया. 9th 10th में बहुत डिटेल में पढ़ते हो आजकल आप, तो जस्ट इट इज रिवीजन फॉर 9th and 10th. तो सीरियसली स्टडी करें आज से. थैंक यू.